The topic we are going to discuss about is reaction kinetics, and the subtopic is determination of rate of reaction. So the determination of rate of reaction involves the measurement of the concentrations of reactants or products at regular time intervals as reaction progresses. When reaction goes on, the concentration of reactants decreases and those of products increases. ये हम पढ़ चुके हैं पहले कि जैसे जैसे रिएक्शन जब प्रोसीड करता है विद टाइम, तो जो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होती जाती है और जो प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होती जाती है. So rate of reaction is delta C over delta T, change in concentration over change in time. So rate of reaction को हम basically graphical method के जरिए जो है वो determine करते हैं. Graph is plotted between concentration of reactant and time and we got a curve. Select any 2 points on the curve. Make a right angle triangle of the points. Getting the tan theta of right angle triangle, we will get rate of reaction that is equal to change in concentration of the substance over time taken for the change. So for the determination of rate of a reaction, we plot a graph जिसमें हम x axis पे लेते हैं concentration, जबकि y axis पे हम time plot करते हैं. Then we plot a curve और इस curve पे हम दो points के दरमियान जो है वो rate of reaction को measure करते हैं. उन दो points के दरमियान हम एक right triangle बनाते हैं और tan theta के जरिए यानी कि base over perpendicular के थ्रू हम rate of reaction को calculate कर लेते हैं. There are two means by which we can measure rate of reaction: physical methods and chemical methods. Let's discuss first the physical methods. First method is spectrometry. The principle of spectrometry lies in the fact that reactants and products absorb UV and IR radiations, and amount of radiation absorbed give rate of reaction. जितनी ज़्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब की होंगी उतनी ज़्यादा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो हमें मिलेगी. So amount of radiation absorbed is directly proportional to the amount of product formed. So greater the amount of product formed, greater the amount of radiations would be absorbed. So अगर हम reactants की बात करेंगे तो जितनी कम radiations absorb होंगी मतलब उतना ज़्यादा reactant जो है वो product में convert हो गया. Diagram you can see how spectrometry is done to determine the rate of reaction. Prism directed light solution से पास की जाती है और solution कितनी light absorb करता है उसको हम measure करके rate of reaction को determine कर लेते हैं. Here is another method called the electrical conductivity method. In this method we use a conductometer and conductivity depends on the concentration of ions in the solution. जितने ज़्यादा ions एक solution में present होंगे उतनी ज़्यादा वो electricity conduct करेंगे and we can measure the rate of reaction. Here we have pictorial representation of electrical conductivity method. Beaker में we have solution जिसमें हमने एक electric rod dip की है. Next जो solution है वो ions conduct करेगा और third step में जितने ions conduct किए हैं solution ने वो हम conductometer की मदद से measure कर लेंगे. So जितने ions ज़्यादा होंगे उतना rate of reaction ज़्यादा होगा यानी कि reaction would be towards completion. Here is a practice MCQ stated as the rate of reaction involving ions can be studied by spectrometric method, dilatometric method, optical rotation method, or electrical conductivity method. And the correct answer is electrical conductivity method. क्योंकि इसमें ions involved हैं और ions जो हैं वो electricity को conduct करेंगे. That's why we use electrical conductivity method. अगर volume change होगा तो हम dilatometric method use करेंगे. अगर कोई सोल्यूशन जो है वो लाइट को रोटेट कर रहा है तो फिर हम ऑप्टिकल रोटेशन मेथड यूज करेंगे और अगर कोई सोल्यूशन रेडिएशन से एब्जॉर्ब करता है तो फिर हम स्पेक्ट्रोमेट्रिक मेथड यूज करेंगे. सो दिस वाज ऑल अबाउट द टेक्निक्स.
I hope you have understood this lecture very well, and thank you so much. Next method is dilatometry method. This method is applied to those reactions in which volume of solution is changed. Volume change of reaction is proportional to the extent of reaction. जितना ज़्यादा volume change होगा उतना ज़्यादा reaction जो है वो proceed करेगा. This is a diagram showing a dilatometer जिसके ज़रिए हम dilatometric procedure जो है वो proceed करते हैं. Here is another method called the optical rotation method. In this we use a polarimeter. Reacting molecules rotates angle of rotation of plane polarized light. Value of angle of rotation gives information about rate of reaction. कुछ solutions plane polarized light को right side पे divert करते हैं और कुछ left side पे divert करते हैं. So हम angle of rotation के through rate of reaction measure कर सकते हैं. जितना ज़्यादा angle rotate होगा, deviate होगा, reaction उतना ज़्यादा proceed कर चुका होगा. So in this diagram you can see ये प्लेन पोलराइज लाइट है जो हमने पहले जो मल्टी डायरेक्शन लाइट थी उसको हमने एक पोलराइजर से गुजार के उसको प्लेन पोलराइज लाइट बनाया और जब वो प्लेन पोलराइज लाइट एक सोल्यूशन में से गुजरेगी तो उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी और इसी एंगल ऑफ डेविएशन को हम मेजर करेंगे टू डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन. Let's discuss another question. The angle through which the plane polarized light is rotated by the reacting mixture is measured by, and the options are refractometric method, optical rotation method, dilatometric method, spectrometric method. And the correct option is optical rotation method. Next is refractometry method. In this we use refractometer applied to the reaction in which change in refractive indices occurs. वो solutions जो light उनमें से गुजरती है तो उसका refractive index जो है वो change हो जाता है. उन solutions के लिए हम refractometry method use करते हैं. Transformation of glucose into alcohol can be analyzed by this method. In this diagram you can see light जब prism से गुजरती है तो वो अपना angle जो है वो deviate कर लेती है. This angle of deviation मेजर करते हुए हम रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर करते हैं और ये जो एंगल की डेविएशन है इसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं. Another way of determining the rate of reaction is via chemical method. In chemical method, acid-base titration is used to determine reaction rate. It is basically a neutralization reaction जिसमें हम एसिड और बेस को यूज करते हुए रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर करेंगे. So for the measurement of the rate of the reaction, we will plot a curve, then draw a right angle triangle, and through tan theta, we will find out the rate. So this was all about the lecture. I hope you have understood it well, and thank you so much.